इन रिलेशनशिप 1980 he again Jayant Mahapatra again touches myths, culture and tradition of Odisha. Jayant Mahapatra shows his relation with Odisha, faith, hope, dreams and memories. Relationship brings 1980 relationship brings him the laurel in the form of Sahitya Akademi Award. लाइफ साइंस 1983 जैन महापात्रा लाइफ साइंस 1983 डील्स विथ हंगर एंड फेमाइन जैन महापात्रा लाइफ साइंस डील्स विथ हंगर एंड फेमाइन द कोज ऑफ मेन्स मॉरल डिसऑर्डर वर्ड्स आर हिज वर्ल्ड हिज पीपल आर लाइक गॉड इन लाइफ साइंस इन 1983 जैन महापात्रा डिस्पोज्ड नेस्ट्स 1986 डिस्पोजेस्ड नेस्ट 1986 recounts the dwellings of the country. Dispossessed Nest 1986 recount the dwellings of the country. जैन महापात्रा की डिस्पोजेस्ड नेस्ट है 1986 क्या करती है रिकाउंट द dwellings of the country. बर्डन ऑफ वेव एंड फ्रूट 1988 में आई थी जैन महापात्रा की. इज द एमालगेमेशन ऑफ हंगर पेन डेथ टाइम एंड हाइपोक्रेसी. टेम्पल ये जैन महापात्रा की हुई थी 1989 में. डील्स विथ पॉवर्टी हंगर फूड प्रॉब्लम सुसाइड रेप एंड किलिंग. ओपनिंग द बाउंड्स अगेन टू क्वेश्चन हाउ सिक्योर वी आर. अ वाइटनेस ऑफ बोन्स 1992. अ वाइटनेस ऑफ बोन्स 1992 में आई थी जैन महापात्रा की. स्ट्रेसेज लैंडस्केप टाइम एंड कंटेम्प्रेरी रियलिटी. शेडो स्पेस आई थी जैन महापात्रा की 1997 में. गिव्स द शेडो स्पेस जो है की गिव्स 1993 में आई थी. गिव्स द आइडियाज ऑफ हैप्पीनेस हेल्पलेसनेस स्केप्टिसिज्म सुपर कॉन्शियसनेस नॉस्टैल्जिया प्रेजेंट रियलिटी वाइल्डनेस इटीसी. शेडो स्पेस जैन महापात्रा की 1993 में. बेयर फेस 2000 में आई थी जैन महापात्रा की. बेयर फेस 2000 में अबाउट कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स द सफरिंग ऑफ वीमेन इटीसी. बेयर फेस बताती है 2000 में 2001 साल में आई थी जैन महापात्रा की. रैंडम डिसेंट आई थी जैन महापात्रा की 2006 में. गिव्स द स्मेल ऑफ वर्ड्सवर्थ द स्टिल शेड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी एज एक्सप्रेस्ड बाई प्रदीप कुमार पात्रा. इट इज ए पोर्ट्रेट ऑफ मेंटल जर्नी इनटू द स्पिरिचुअल साइलेंस. रैंडम डिसेंट 2006 में आई थी जैन महापात्रा की. द लाई ऑफ डाउन्स पोइम्स. द लाई ऑफ डाउन्स पोइम आई थी 1974 से 2008 के बीच में. is not at all a collection but a selection from his different works together with a few unpublished poems to be continued on fingers. लैंड आई थी जैन महापात्रा की 2013 में. ए स्लिम वॉल्यूम थी लैंड 2013 में जैन महापात्रा की. और पोइम्स ऑन द थीम्स ऑफ सोशल रिकरेंट पोइट्री जैन महापात्रा की. Mahapatra is an original poet. His poetic sensibility is typically Indian. Jain Mahapatra is intentionally aware of his environment and vividly portrays his variegated Odisha landscape throbbing with religious fervor. Odisha landscape with Puri and Konark looming large has a dominant presence in his poetry. The Odisha landscape has been vividly depicted in Down at Puri, listening to a prayer Jain Mahapatra, Indian summer, thought of future, Konarka, Odisha landscape, the ruins Jain Mahapatra etc. Down at Puri Jain Mahapatra is an imagist poem. Down at Puri by Jain Mahapatra. The panorama of Puri, artistically portrayed with vivid images and symbols, becomes evocative. Puri is regarded as a sacred site. It is the wish of every Hindu to be cremated there to enable them to attain salvation. The poem consists of 6 stanzas having 3 lines each. There is no rhyme scheme. एंडलेस क्रो नॉइजेज जैन महापात्रा की पोएम के है लाइन ऑफ राइट्स के. एंडलेस क्रो नॉइजेज अ स्कल इन द होली सैंड्स tilts its empty country towards hunger. Her last wish to be cremated here, twisting uncertainly like light
on the shifting sand. ये रेन ऑफ राइट से लिया गया है. The an imagist poem is short and contains a series of images which are precise and shapely etched. Ezra Pound founded a school of poetry which came to be known as imagism में एजरा पाउंड. और इसने किसने किया था? जयंत महापात्रा में, इंडियन राइटर में. जयंत महापात्रा's early poems were born of love selfishness, but slowly and steadily he released himself from this lonesome citadel of love and learnt involving himself with other men, living or dead, with many other secluded chambers of living. Death is a new beginning for the poet, and life a telegraph key tapping away in the dark. Childhood memories occupy a considerable space in his poetry. His commitment and identification with Odisha becomes complete when he exalts the dark daughter engraved on the body of the sun temple at Konark. Hunger, Jayant Mahapatra ki, is one of the best known poems by Jayant Mahapatra, published in his collection A Rain of Rights. Hunger brings out the role of poverty in brutalizing the sexual relationship. The complex theme of the hunger at 3 levels is treated in a simple way. The simplicity and strength of this poem of hunger has made it one of the most great peak of Indian poetry in English. This poem, Hunger, is touching story of the daughter of a poor fisherman who allows his daughter to become a war to keep starvation at bay. I heard him say, "My daughter, she has just turned 15. Feel her, I will bake soon. Your bus leaves at 9. The sky fell on me and a father exhausted while long and lean. Her ears were cold as rubber. She opened her bony legs wide. I felt the hunger there. The other one, the fish, slithering, turning inside." About the autobiographical elements in this poem, Mahapatra has written in his Door of Paper essay and memories. The poem is based on a true incident. It could easily have happened to me on the poverty-ridden. My inherent security working on me to face the girl inside the dimly lit palm crowd shake. The landscape of Gopalpur chose me and my point to face, perhaps my inner self, to see my own debasement, to realize my utter helplessness against the stubborn starvation light of my country. His poetry, Jayant Mahapatra's poetry, is always earnestly unpretentious and powerful. Mahapatra demonstrates a deep aesthetic concern for both structure as well as linguistic versatility, revealing maturity and originality of a remarkable high order. Jayant Mahapatra's symbols and images are evocative and suggestive. The poem Hunger impressed so much to Bernard Young, the American poet, that he quoted it in the Hudson Review. Indian Summer is a popular poem by Mahapatra. Indian Summer, published in his collection Rain of Rights में एक collection में publish हुई थी Indian Summer जयंत महापात्रा की. The poem is remarkable, जो Indian Summer remarkable for clear and exact imagery, judicious choice of words and compactness. The diction has a defective simplicity. The poem illustrates the fact that his vision is basically tragic and his pessimism and somber outlook may be accounted for his keen sense of the suffering of Indian masses.
Although the poem describes a typical Indian summer, many critics have commented that the poem is a veiled commentary on the suffering women. Some others have commented that it was one of the amateur poems of Mahabharata despite the originality poetic sensibility. Over the so showing the somber wine priests chant louder than ever. The mouth of India opens. Crocodiles move into deeper waters. The good wife lies on my bed through the long afternoon, dreaming still, not exhausted by the deep roar of funeral pyres. The richness and sophistication of language, the softness and delicacy of the words, fusion, systemized orchestration of authenticated experiences through the exact palpability of images, the sincerity of harping on the feel of the experiences rather than on their thought, the sweetness of music emerging from a fountain-like flow of the words from contribute to the greatness and ingenuity of Mahapatra's poetry. A country presents the picture of hunger and starvation in the countryside of India. The poem records the sorry plight of the people. Even after independence struggle and fighting could not change the condition of the people, and sometimes visualize and thinks about the condition of his own country. He broods over the sorry state of his motherland. Sometimes at night when all voices die, my mind sees earth, my country, to accept sacrifice, the loss of friends. I am unable to force an answer out of you. Wherever I try to live in pious penitence at Puri, or in the fiery violence of a revolutionary, my region becomes a prejudiced sorrow like socialism, and not understanding myself and not understanding you. The version her age been edited from its original publication in the volume Waiting. The poem is one of the more philosophical ones, and perhaps Jayant Mahapatra is trying to improve its craft. Jayant Mahapatra portrays his native rituals, customs, Konark and Jagannath temple, Puri and Dholi vividly and vehemently in his poems. Mark the following lines from his lovely verse piece Dholi. Afterwards, when the wars of Kalinga were over, the fellow fields at Dholi, fields of Dholi, hid the blood split, butchered bodies, earlier red smarted voices bodies, with its merciless worms, earlier tortured worms, guided the foxes to their limp genitals. Jayant Mahapatra has a geographical imagination for positioning things in their local. He lets meaning emerge out of the poetic process and in the interaction of the self with the material life world. For him, poetic activity is an attempt to create space and formulate its configuration in the temporal scheme of a person. World Mahapatra's resources are basically lyrical and reflective. Mahapatra is aware of a deep crisis enveloping India where the towering historical monuments eclipse the achievement of the present. Works, awards and honors by Jayant Mahapatra. Poetry collection Swayamvar and other poem 1971 में आई थी जयंत महापात्रा की. Clear the Sky 10/10 1971 में आई थी जयंत महापात्रा की. Close the Sky 10/10 आई थी 1971 में जयंत महापात्रा की. फादर्स आवर्स 1976 में आई थी जयंत महापात्रा की. A Reign of, ये पोएट्री कलेक्शन है.
रेन ऑफ राइट आई थी 1976 में, फादर्स आवर्स आई थी 1976 में जैन मात्रा की, वेटिंग आई थी 1979 में जैन मात्रा की, द फॉल्स स्टार्ट बॉम्बे, क्लियरिंग हाउस 1980 में आई थी जैन मात्रा की, रिलेशनशिप 1980 में आई थी जिसके लिए साहित्य अकादमी मिला था 1981 में जैन मात्रा को, लाइफ साइंस 1983 में आई थी जैन महापात्रा की, डिस्पोज्ड नेस्ट आई थी 1986 में जैन महापात्रा की, सिलेक्टेड पोएम आई थी 1983 में जैन महापात्रा की, बर्डन ऑफ वेव एंड फ्रूट आई थी 1988 में जैन महापात्रा की, टेम्पल आई थी 1999 में जैन महापात्रा की, वाइटनेस ऑफ बोन आई थी 1992 में जैन महापात्रा की, द बेस्ट ऑफ जैन महापात्रा आई थी 1995 में जैन महापात्रा की, शेडो स्पेस जैन महापात्रा की 1997, बेयर फेस 2000 में आई थी जैन महापात्रा की, रैंडम डिसेंट 2006 में आई थी जैन महापात्रा की, संपर्का नातुना दिल्ली आई थी 2006 में जैन महापात्रा की, लाइफ ऑफ डाउन्स 1977 2009 में आई थी जैन महापात्रा की, और लैंड आई थी 2013 में जैन महापात्रा की पोएट्री कलेक्शन। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो काउंटर मेजर्स पोइम्स आई थी 1973 में जिसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, विंग्स ऑफ द पास्ट पोइम्स आई थी 1976 में जिसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में जैन महापात्रा ने, सॉन्ग्स ऑफ कुब्जा एंड अदर पोएम आई थी 1991 में जैन महापात्रा की, आई कैन बट वाई शुड आई गो पोइम्स आई थी 1994 में जैन महापात्रा की, वर्टिकल्स ऑफ लाइफ पोइम्स आई थी 1996 में जैन महापात्रा की, तपस्विनी ए पोइम जैन महापात्रा की थी 1998 में, डिस्कवरी एंड अदर पोइम आई थी जैन महापात्रा की 2001 में, अ टाइम ऑफ राइजिंग 2003 में आई थी महापात्रा की, शॉर्ट स्टोरी जैन महापात्रा की द ग्रीन गार्डनर 1995 में, अदर डोर ऑफ पेपर एशियन मेमोरीज आई थी जैन महापात्रा की, एडिटेड देन द न्यू इंडियन पोइट्स विथ यूसु शर्मा 2013 में, टाइटल ऑफ सिलेक्टेड पोइम एस फ्रीडम, हर हैंड, हंगर, इंडियन समर, मिसिंग पर्सन, द लॉजिक, ग्रास, लॉस्ट, ग्रैंडफादर, धोली, रिलेशनशिप, ग्रैंडफादर, रेन ऑफ राइट्स, मैन, टेम्पल, स्ट्रीट एट पुरी, धोली, संस्कृत, टेस्ट ऑफ फॉर टुमारो, कंट्री फेस्टिवल, गॉडली एंड ग्रेट समर पोइम, धोली, रिलेशनशिप, ग्रास, मिथ, द इंडियन वे, थॉट ऑफ द फ्यूचर जैन महापात्रा, द मून मोमेंट जैन महापात्रा, अबेंडन ब्रिटिश, द वॉर हाउस इन कोलकाता स्ट्रीट, ये सारी जैन महापात्रा की। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सेकंड प्राइज इंटरनेशनल हुज इन पोइट्री लंदन, जैकब ग्लासस्टीन मोहम्मद अवार्ड मिला था, काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैन महापात्रा को, जापान फाउंडेशन का अवार्ड मिल चुका है, ये सारे अवार्ड है।